Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल-केमिस्टिक। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है और हम वक्तन फ़वक्तन आजकल गेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और वक्तन फ़वक्तन हमने 10th क्लास के जो हैं डिफरेंट पेपर्स से रिलेटेड गेस्ट पेपर्स आपके साथ शेयर किए। आज का जो हमारा पेपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है और वो है कंप्यूटर। जैसे कि आपको पता है कि अभी मैंने आपको रिसेंटली बायो से रिलेटेड भी गेस्ट पेपर सेंड किया है। आज इंशाल्लाह आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर डिले किए। सबसे पहले आप देखें 10th कंप्यूटर के गेस्ट पेपर में सबसे पहले आपने जो क्वेश्चंस करने हैं उनमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ बताए गए हैं। एक तरफ इंग्लिश में और दूसरी तरफ उर्दू में भी लिखा गया है ताकि आपको करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले देखें डिफरेंस बिटवीन रन टाइम एंड लॉजिकल एरर्स। उसके अलावा व्हाट इज मीन्ड बाय सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन, हाउ शुड बी वेरीफाइड द एल्गोरिथम, व्हाट इज मीन्ड बाय डेस्क चेकिंग, व्हाट इज कोडिंग, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम, डिफाइन प्रोग्रामिंग, व्हाट इज प्रोग्रामर, डिस्क्राइब द स्किल्स ऑफ गुड प्रोग्रामर, हाउ विल यू टेस्ट द प्रोग्राम। उसके अलावा नेक्स्ट आगे आ जाएं तो नेक्स्ट आगे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं डिफाइन प्रोग्रामिंग के बाद हाउ विल यू टेस्ट द प्रोग्राम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बग एंड डीबगिंग, हाउ मेनी टाइप्स कैन बी देयर ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स, व्हाट इज मीन्ड बाय सिंटैक्स एरर, डिस्क्राइब द रीजन ऑफ सिंटैक्स एरर्स, व्हाट इज रन टाइम एरर, व्हाट इज लॉजिकल एरर, डिस्क्राइब सम इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ लॉजिकल एरर, what is write the techniques, which technique is used for analyzing the problem, what is meant by problem analyzing, what is meant by program demonstration। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप आ जाएं तो व्हाट इज मीन बाय प्रॉब्लम एनालाइजिंग के बाद व्हाट इज मीन बाय प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट इज मीन बाय सिंटैक्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम, व्हाट इज फ्लो चार्ट, why flowchart is designed for problem solving, describe advantages of flowchart, describe limitations or disadvantages of flowchart, write any two symbols and their purposes of flowchart, describe the uses of connector in the flowchart। उसके अलावा आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ इनपुट और आउटपुट सिंबल, ड्रॉ द सिंबल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। उसके अलावा नेक्स्ट आगे आ जाए आप। नेक्स्ट आपने जो शॉर्ट करने हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन describe the uses and connectors in the flow chart, describe the purpose of input or output symbol, draw the symbol 2, in which year and who invented GW basic। उसके अलावा state the introduction of GW basic, state 3 major properties of the basics। देन उसके आगे आप जो शॉर्ट करेंगे स्टेट द मेथड ऑफ ऑपरेशंस इन GW बेसिक। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन करने हैं व्हाट इज कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बाद स्टेट पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ किल कमांड, व्हाट इज मीन बाय GW बेसिक, स्टेट द यूज ऑफ ऑटो कमांड, state the use of REM statement, state the purpose of MKDIR command, state the difference between name and renum command, state the difference between list and list command, difference between and rem statement, difference between stop and end statements, what are operators, and state different types of operators। उसके बाद आगे क्वेश्चन आएंगे व्हाट इज कांस्टेंट, स्टेट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। फिर उसके आगे आप आएंगे स्टेट द पर्पस ऑफ सिंटैक्स ऑफ किल कमांड, GW basic, auto command, RAM statement, MKDIR, name and random command में difference, list and list में difference, and और RAM में difference, stop और end में difference, operator और उसकी types। उसके बाद आपने आगे आना है what is scroll bar, write its uses, what is difference between title bar और tool bar of MS Word, write names of different views of document in MS Word, what does print layout do, what is meant by copy command, what is meant by paste command, what is meant by cut command, how would you copy and paste a document in MS Word, what is difference between copy and paste document in the MS Word, what is difference between save and save as, what is meant by document formatting। उसके आगे लॉन्ग क्वेश्चंस में हम आएंगे जिसके लिए आपने पहले करने हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने क्वेश्चंस करेंगे उसमें आते हैं सबसे पहले व्हाट इज डीबगिंग, हाउ मेनी एरर्स कैन बी अकर्ड इन प्रोग्राम, डिस्क्राइब शॉर्टली, व्हाट इज एल्गोरिथम, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स फॉर डेवलपिंग द एल्गोरिथम, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट,
फिर इसी तरह डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर, हाउ मैनी कंट्रोल स्ट्रक्चर आर इन बेसिक्स, डिस्क्राइब शॉर्टली। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, आल्सो डिस्क्राइब अबाउट कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। उसके आगे आपने बताना है व्हाट इज purpose of IF, then else statements, explain it with example. What is loop, explain for, next loop with the syntax and programs. उसके आगे आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, इन हाउ मेनी मोर GW बेसिक्स कैन ऑपरेट, स्टेट शॉर्टली, डिफाइन वेरिएबल्स, स्टेट द रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स इन GW बेसिक, स्टेट द टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन GW बेसिक, आल्सो गिव एग्जांपल्स, व्हाट इज कांस्टेंट एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन बेसिक विद एग्जांपल, व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक ऑपरेटर, स्टेट द अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज्ड इन बेसिक, व्हाट इज मीन बाय प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड राइट द रूल्स ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन बेसिक, डिस्क्राइब द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ read statement and explain it with example, describe screen statement and give example, write different modes of screen statement. उसके अलावा जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए आपने आना है व्हाट इज कांस्टेंट एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन बेसिक विद एग्जांपल, what is meant by arithmetic operators, state the arithmetic operators in basic, what is meant by procedure of operator and write its rules of operators precedence in basic, describe the purpose and syntax of read statement and explain it with example, describe screen statement and also give example, write different types, different modes of screen statement, write the purpose of circle statement and syntax and explain it with example, and write the purpose of draw statement and syntax and also explain with example. ये थे भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन 10th कंप्यूटर से रिलेटेड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी तरह का आपको अगर किसी पॉइंट पर इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।